If the function f of x is x cube plus e raised to x by 2 and g is the inverse of f, then the value of g dash of 1 is equal to. Okay. Okay, तो पहले information लिख लेंगे. There is a function given to us. Okay, there is a function given to us, ex cube plus e raised to x by 2, and it is given that g is the inverse of f. Okay, it's given that g is the inverse of, और हम लोगों को पूछा है g dash of 1. मतलब ये प्रॉब्लम क्लियरली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पर बेस्ड है. Sir, there was a similar question in CT1. Very good. Hope you could solve it. Could you? Anyways. तो yeah, so this is based on derivative of inverse functions. क्या हमारे पास derivative of inverse function का theorem है? It's there. What is the theorem? If y is f of x, then x becomes f inverse of y provided f is 1, 1 and on 2. And the conclusion is derivative of x with respect to y is 1 upon derivative of y with respect to x. Open the notes or textbook, you will find this theorem. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम dy by dx निकालेंगे, which is very easy to find here. Can you tell me derivative from f of x? Yes, please tell me what will be derivative of e raised to x by 2? E to the power x by 2 divided by 2. करेक्ट. पहले तो चेन रूल, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to का डेरिवेटिव e raised to एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2. ओके, तो अगर अब मुझे निकालना है dx by dy, तो वो है 1 अपॉन 3x स्क्वायर्ड प्लस e raised to x by 2 by 2. Okay, now tell me how will you find dx by dy at 1? Yes, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकालना हो गया ना. इट्स देयर ना. g इज द इनवर्स ऑफ f, उसका डेरिवेटिव dx पड़े, उसका एक्सप्रेशन रेडी है मेरे पास. हाउ विल यू इवैल्यूएट इट्स वैल्यू एट 1? प्लीज टेल मी. Yes, come on. Should we directly substitute the values of x? As Put 1 in every x. okay, so see, I'll tell you that is not right. You should not substitute. Okay, you should not substitute the value of x as 1 in there because it is not 1. Look here, ये चीज आप समझ लो एक बार. Okay, let me explain you in this way. Y is equal to f of x. When we write this, input is x and output is y. Okay, but when I write x equal to f inverse of y, my input is y and my output is x. क्योंकि मैं y को इनपुट देके फिर मैं x को निकालूं, तो दैट इज बिकॉज आउटपुट. करेक्ट. अब जब मैं dy by dx निकाल रहा हूं इस केस में, तो मुझे ये पता है यूजुअली कि ये जो मेरा dy by dx रहेगा इज इन टर्म्स ऑफ x.
फॉर आवर एक्सप्लिसिट फंक्शंस एटलीस्ट। लेकिन जब मैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूं, मतलब derivative of x with respect to y, that is in terms of what? That is typically in terms of y. Therefore, in g dash of 1, 1 is not value of x, but the value of y. Because it, अगर dx by dy आप निकाल रहे हो तो आप यूजुअली वही एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो y का फंक्शन है, इसके बाद ही आप dx by dy निकालेंगे यूजुअली। आई मीन लुक एट dy by dx, जब y x का फंक्शन होता है तब डेरिवेटिव भी x का फंक्शन होता है। जैसे कि y sin x लिया तो उसका डेरिवेटिव हो गया cos x। अब जब मुझे साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, जब मेरे पास एक्चुअली y की वैल्यू है, उससे मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं। इज दैट क्लियर? तो g डैश ऑफ 1 में 1 ये x का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है? वो y। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि g ये f का इनवर्स है, और इनवर्स फंक्शन में वेरिएबल्स का रोल इंटरचेंज होता है। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये मैंने एमसीक्यू में सेट किया तो एक ऑप्शन रहेगा जहां पे 1 रहेगा x का वैल्यू, बट वो 1 नहीं है। लेट्स सी नाउ हाउ टू फाइंड इट। देयरफॉर we will first find value of x for which f of x, that is y, equals 1। क्यों 1? क्योंकि उन्होंने g dash of 1 पूछा है इसलिए। ओके, अभी x का वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है? Why is it necessary to find the value of x? बिकॉज हमारा जो dx by dy का एक्सप्रेशन है उसमें x इन्वॉल्व, इसीलिए हम लोगों को पहले x का वो वैल्यू निकालना पड़ेगा जो f of x के डेफिनेशन में डालने के बाद y का वैल्यू 1 दे रहा है। गॉट इट? तो जाएंगे अभी f of x में और निकालेंगे वो वैल्यू जो 1 दे देगी हम लोग। Any observations? ऑब्जर्वेशन से ही निकालना पड़ेगा अभी, मतलब ट्रायल एंड एरर से। कैन यू टेल मी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल वी गेट f of x as 1? 0, करेक्ट। तो x का वैल्यू हो चुका है 0। और ये हमेशा याद रखना, while guessing the value, always try 0 plus 1 minus 1 plus 2 minus 2। उससे ये 5 में से यूजुअली होता है। ओके, so having obtained the value of x, we are now in a position to find g dash of 1, which means the derivative of x with respect to y when y is 1, that is the derivative of x with respect to y when x is 0. And now we can go back to the expression and substitute x value to be 0. अगर आपने x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिल रहा है आपको? 3 into 0 plus e raised to 0 by 2 by 2। 3 into 0 0, e raised to 0 1, 1 upon 2, so that's 2।